But if I don't need an introduction, then why should I give an introduction? Just in case if there's someone who doesn't know you, can you please introduce yourself? I don't have that situation in life. Well, luckily you, sir. Okay, sir. So Navara has created this platform for coming up influencers and present influencers. How important do you think this really is? Is what? How important this really is for the influencers? The influencers? Yeah, this platform like Navara. Well, it is influential. It's important. It's as important as any social media situation is. I'm happy to be here for Navbharat Time Awards and happy to travel all the way from other side of the world. But it's a nice place and I'm very happy and I thank all the people who are involved in this event for inviting me to this event. How will celebrate 15 years? Yes, yes. Aarti Nautiyal is a woman of substance. She has great connection with people, personal connection and credibility, and I'm happy to be her friend. My next Signature is a very important film of our times, especially after pandemic. Everybody who has gone through pandemic, that is the whole world, they have felt what it means to be in the hospital. Some relative, some friend, some distant cousin has gone through that whole experience. The film is coming on the 4th of October on Z5 and it's a very, very emotionally beautiful film, even if I'm saying it myself. It mirrors a section of the society beautifully. It talks about what a husband can go to the extent of wanting to save his wife. It's about father and son, the children, how they also go through a lot of problem with somebody is in the hospital. It also talks about friendship between my character and Mahima's character, Mahima Chaudhary's character. It also talks about if you are in a situation where your close one is on ventilator and you are the person who has to decide whether the ventilator should be removed or not, what will you do? May God never get you into this situation, but if that happens, well, how will you manage it? नमस्कार नमस्कार हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो हाय, आई एम कीकू शारदा एंड आई एम अ कमेडियन एंड एन एक्टर. और क्या कहूँ? Oh, it's extremely exciting because it's a very, very honorable and respectable award, and for any actor or anyone otherwise, if you're not even an actor, it's quite an honor to receive an award from such a prestigious platform. So that's what I'm extremely excited about. मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यहाँ नवभारत से अवार्ड मिल रहा है. मैं देखिए हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी अगर एक्टर या इस फील्ड में काम करना चाहता है, पहली चीज़ तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त लगता है सभी को. काफ़ी लोग सक्सेस की काफ़ी ओवरनाइट उम्मीद करते हैं, तो ओवरनाइट चीज़ें होती नहीं हैं. तो या यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड टाइम, एंड या सो गिव योर सेल्फ टाइम एंड गो ईजी. आई एम श्योर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. देखिए, अगर एक जोक हमने डिलीवर करने की कोशिश की और वो उस तरह नहीं गाया जिस तरह हमने उम्मीद की थी, तो ऐसा होता है. तो कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे ही बढ़ना पड़ता है, बिकॉज यू गॉट टू लीव दैट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड. बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट जस्ट द जोक, इट्स अबाउट द मूड ऑफ द सेलिब्रिटी ऑल्सो दैट यू क्रैकिंग अ जोक विथ. अब वो रिसीव कर रहे हैं, ऑडियंस ने रिसीव नहीं किया, कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो गया. पर जिस तरह आपने हमारा शो देखा है, हम एक नाटक, एक प्ले की तरह करते हैं. हम एक बार शुरू करते हैं तो रुकते नहीं हैं. सो देर आर नो कट्स. सो वट एवर वी goof up on, if something goes wrong also, we need to continue. तो हम बढ़ते रहते हैं आगे. आई थिंक that's the flow of life also that one should take. Just keep moving.
Bubble Communication has completed 15 years. So well, big congratulations to Bubble Communications on completing 15 years. Quite a landmark to be around for 15 years and doing so well for 15 years. So very well done and all the best for the future. So lastly पूछना चाहूँगा सेकंड सीजन आ चुका है साइंटिफिक कमेंटेबल हो गई है क्या कहना चाहेंगे किस तरह से प्यार चल रहा है तो देखिए पहला सीज़न हमारा काफ़ी अच्छा गया नेटफ्लिक्स पर हमारा सेकंड सीज़न पिछले अभी शनिवार को ही शुरू हुआ है सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली वी कमिट डबल द फन डबल द एन्जॉयमेंट और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अब शनिवार को आप शनिवार कहना बंद कर दीजिए अब ये शनिवार नहीं अब ये फनीवार है तो प्लीज़ सब फनीवार ही कहें सो इट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग हमारे एपिसोड्स वाइज हमने सारे के सारे अभी शूट नहीं किए अभी हाफ वे थ्रू आधे हमने शूट कर लिए आधे शूट करने बाकी हैं लेकिन जितना भी हमने किया है हर एपिसोड में कुछ नया किया है कुछ एक्साइटिंग किया है ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे मेरे थ्रू या सुनील ग्रोवर या कृष्णा के थ्रू हमने काफ़ी नयापन लेकर आए हैं इस नए सीज़न में तो आप ज़रूर देखें उसे थैंक यू या like stage fear आपको भी कभी ना कभी एक stage पे होगा ही होगा how come over that for the new generation सी देखिए मेरा पॉइंट ये है कि नर्वसनेस एक स्टेज पे जाने से पहले सभी को होती है मैं आज 20 साल से मेरे ख्याल से टेलीविज़न करने के बाद भी आज भी स्टेज पे जाता हूँ तो सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्वसनेस इज स्टिल देयर सो इट्स नेवर गोइंग टू गो अवे इट्स अबाउट हाउ यू कोप विद इट तो कोपिंग के लिए यही कह सकता हूँ कि द मोर यू डू इट द मोर ईजियर इट विल बिकम फॉर यू द फर्स्ट फ्यू टाइम्स इट डज गेट अ लिटिल डिफिकल्ट बट या आई मीन आप अपने आप को काम रखें और या आई मीन एज अ हैबिट ऑल्सो आपको कोई छोटी छोटी बातों पे पैनिक ना हो इस चीज़ की आदत डालें तो स्टेज पे भी सेम थिंग अप्लाइज सो या कीप योर कूल कीप योर काम एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट थैंक यू सो मच थैंक यू भाई थैंक यू नहीं इस बार मैंने सारे जो अतिथि हैं और हमारे पूज्य मंत्री जी आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि अपने धमाल को मैं थोड़े काबू में रखूं बट मैं बहुत ही सम्मानित फील कर रही हूँ कि एक तो नव भारत ने मुझे बुलाया इधर इस प्रकाशन के हम बहुत बहुत पुराने फैंस हैं और चाहने वाले हैं सभी पत्रकारों के सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम हियर How important do you think this event is for influencers? It's important because we have a lot of international portals who are doing, like there are other awards for influencers, but एक हिंदी प्रकाशन जो हमारी खुद की उपज है उनको ये करना इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत मायने रखता है So, Bubble Communication is very 15 years. Did you have any word for us now? We are the PR team. I am very grateful to the PR team because any PR team and in case you've been around for 15 years so many congratulations. We are all known to the audiences because of a great PR company and one that can stick around for 15 years they put some hard work in. You want me to introduce myself? Yes. Okay, hi, this is Madhurima Tuli. And what else do you want me to tell you? Like, ma'am about your work and about my work, I have one film coming up very soon, and one web film, and we've come up with this SVMT channel with me and my brother. So we have one more musical short film coming out very soon. तो वो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. So I'm keeping my fingers crossed. Yeah. ma'am so you're receiving an award from Nav Bharat. How do you feel? I feel overwhelmed, very excited and honored because it's something special. This is the first time I'm getting an award for iconic entrepreneur. So it's a lot of pressure, but I am very excited and grateful for it. ma'am so just like this how like not bring your because being an actor emotions where you're feeling something else and you have to show something else. Let's say you're feeling happy but Yeah. you have to portray your sad emotions. Yeah. How like portray it in a better way कि मैं खुश हूँ but मेरे को आज sad करना या आज मैं sad हूँ मेरे को खुश दिखाना है. I think actor का यही काम होता है. When you are happy, I think you need to get into that space zone
जहाँ पे आप थोड़ा एक घंटा अपने आप के साथ बिता रहे हैं, जब मेकअप कर रहे हैं तब कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सैड हो जाते हो, तो गाने चला लिया, मैं कभी कभी गाने चला लेती हूँ सैड सॉन्ग, तो उसमें अपने आप ही थोड़ा दिल भर आता है, सो दैट हेल्प्स. जब आप सैड है तो खुश होना, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट आई थिंक, बिकॉज कॉमेडी आई थिंक इज़ वेरी डिफिकल्ट, और या खुश होना दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. But I think that's what actors are. I mean, you have to be prepared for everything. So whatever comes your way, you have to do it. Always be happy. I think from inner side also. I think that's the most important thing. And I think yeah, healthy food. बहुत सारा पानी पियो बस. Bubble communication has completed the 15 years. I would say congratulations to Bubble Communication. It's a big deal, 15 years. So congratulations to the entire team. Thank you. Thank you. Thank you. Hi everyone, this is Mukti Mohan. I introduced myself about my work. Okay, so it's been 15 years and I have been dancing and acting and doing comedy, and I also did stunts. So transitioned from TV to OTT and to films now, and hopefully to your hearts. So thank you so much for accepting me first of all on all the platforms. And today we are celebrating NBT Influencers Awards, and I'm so glad that they invited me here. Really humbled and extremely honored. And feels really privileged and really nice that everyone is here celebrating good influence in life. And so I'm here and cheering for everyone and supporting everyone. I genuinely believe that these days role models are really important, and there is all kind of influence in the world, but we are celebrating good influence, and which is really good. And I'm being a part of it, and I'm really honored that they think that I'm a part of it. Thank you so much. One last question. Bubble Communication serving 15 years. Any words for us? Congratulations, Bubble Communications. You're completing 15 years, and it takes a lot of courage and grit and determination to complete 15 years as a company. So, all the very best. Thank you. Thank you. My pleasure. For those who don't know you, can you please introduce yourself? Vandana Sajnani Khattar, actor, producer, director, blogger, influencer, chef, and mommy of a wonderful 5-year-old boy. Ma'am, Navrat is hosting influencers. How important do you think this really is for starting coming up with influencers? Oh, it's fantastic, and it's pretty much required now, because it is the need of the hour. Also because influencers, it's not only influencers on social media, it's influencing people on a day-to-day life. And if you guys are acknowledging it, awarding the people, I think it's a wonderful idea. So, Bubble Communication is celebrating 15 years. Any words for the PR team, ma'am? Congratulations, and it's a big one, and let the bubble grow more and more and more. I hope it doesn't. Yeah, it doesn't burst. Thank you. See, I'm very honored, like मतलब आप part of this event, right? So और creators के लिए तो एक बहुत बड़ी opportunities है, right? जहाँ पे आप अपने point of view share कर सकते हो with your audience, with the newcomers creators. So I think this is the biggest opportunity for me. Anything else? No. Thank you so much. Thank you.
about this big event. Okay. Ready? Hello, I'm content creator Shrima Rai, and I'm so happy to be here at the Navbharat Awards. I think it's an amazing, amazing accomplishment, and I feel so proud to be here, a part of such a wonderful event where people who inspire us every day, the influencers, the celebrities, and everyone who is making a difference in the world of digital, social media, etc., is here today, and I'm so happy to be a part of it. It's an honor to be nominated for the award, and I'm so happy to be here. So I'm nominated in the entertainment category, and again, like I said, just the fact कि मैं nominate हुआ हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, and I'm very excited to be here. Thank you. Thank you. A friend of mine, and working together has been great already on our first project, and I'm just waiting to do so much more work with them. Yeah, thank you. Okay. Hi, I'm Rupa. The audience has given me that power. So yeah, thank you. Thank you so much. Yeah, we're done. Thank you. सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज़ कि ट्राई टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन योर पैशन. जो भी आपका पैशन है उसमें इन्वेस्ट करो. अभी यंग हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कर लिया तो हो सकता है कि आपका, तो बस यही यंग जनरेशन को बोलूँगा. एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो, शॉर्टकट मत ढूंढो. थैंक यू सो मच. से रिलेटेड भी है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ नवभारत इन्फ्लुएंसर अवार्ड, बिकॉज यार इतने कम उम्र में ऐसी चीज़ें होना ना. आई एम तेजस पाटिल. आई एम अ टेक एंड एंटरटेनमेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, एंड मैं एक एजेंसी पे चलाता हूँ. आई हैव अ मार्केटिंग एजेंसी एज वेल एज आई एम अ coach. I'm teaching students how to build their personal brand on social media, and majorly I'm creating content about technology, जिसमें मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ जिसमें लोगों के लाइक डे टू डे लाइफ में उनको हेल्प हो कि कैसे टेक्नोलॉजी उनके लाइफ में बेटर इंटीग्रेट हो सके. सो दैट्स ऑल. मतलब मेरा एक बेसिकली वही मिशन था कि जब मैं बचपन में अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करता था रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने ऐसे लोगों को भी सिखाना चाहिए कि ऐसे टेक्नोलॉजी को, फ़ोन्स को, अपने लैपटॉप्स को, या फिर ऐसे टिप्स मैं शेयर करूँ लोगों के साथ जो उनके डे टू डे लाइफ में हेल्प करें. तो वही एक एम लेके, एक मिशन लेके मैं चला था, एंड वो एक अच्छा बूस्ट भी मिला. लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था मेरा कंटेंट, एंड आई ग्रू वेरी क्विकली. तो सोशल मीडिया की वजह से आई हैव ट्रांसफॉर्म माई लाइफ. तो आई एम एमिंग कि मैं ऐसे लोगों को हेल्प करके, सालों का 5, 6, 7 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जहाँ पर बिना किसी मतलब कुछ मिले हमने काम किया है. एंड उस पूरी मेहनत का आज अगर ऐसा एक पब्लिक के लिए इतना बड़ा स्टेज पर जाकर इफ़ आई एम गेटिंग दैट रिकग्निशन, इफ़ आई एम गेटिंग दैट अवार्ड, तो मतलब पर्सनली एक बड़ा अचीवमेंट फील होता है. एंड आई फील ऐसे आगे मैं लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट लाते रहूँ एंड उनको हेल्प करते रहूँ, सो दैट लोगों का भी भला हो, एंड साथ में मुझे भी एक ऐसा फीलिंग आए कि आई हैव अकम्प्लिश समथिंग. So yeah, Bubble is, I can see, I mean like Bubble has organized this event and helped in the entire hospitality, I guess. तो I feel like complete 15 years in a industry जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं,
it's a very big thing, and I hope Bubble keeps working like this, and keeps giving input in this industry, so that हम जैसे creators को भी थोड़ा सा empowerment मिले. So yeah, all the best. Thank you. हमें अच्छा लगता है और काम करने के लिए. मेरे प्रेम भैया उन्होंने इनवाइट किया मुझे, आ जाइए. ये भी हमारे यूट्यूबर ये फिटनेस बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, ठीक है. और सलमान खान, आमिर खान, विकी कौशल, सबको ये इन्होंने ही ट्रेन किया है. हाँ, ठीक है. तो अब इनसे फिटनेस पे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो. अरे वो उनको बताना नहीं पड़ता, वो सारा खुद कर लेते. अभी स्टार्ट किया है सिकंदर के लिए, अभी वर्कआउट स्टार्ट किया. बीच में कुछ इंजरीज चल रही थी. मेरे फिलहाल साउथ में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. एक साई धर्म तेज और एक वरुण तेज के साथ. यहाँ पे मैं हुमा के साथ काम कर रहा हूँ, बिपाशा के साथ काम कर रहा हूँ, और आयुष्मान खुराना के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. ये मेरे अपने स्पेशल लोग हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ. और ज़हीर और सोनाक्षी, सॉरी भूल गया, इनके साथ भी कर रहा हूँ. तो ये मेरे छोटे मोटे वर्क्स फिलहाल चल रहा है. एनीथिंग एल्स? लेट्स प्रे. थैंक यू. मेरा नाम गौरी भसीन है. I'm Gauri Bhasin. I'm a YouTuber and a content creator. Anything else? That's it? Actually, I'm very happy and it's an honor. It's an honor to be over the top, and I cannot express how I'm feeling in words because मेरा पूरा stomach is in this thing and I'm so excited. I really hope I get to attend more of these events and I'm very grateful. Okay. Sorry, I don't really know what to say, so it's okay. I'm so sorry. इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 2 years, और 2 years में हम लोग ने 2.3 मिलियन फॉलोअर्स गेन करे थ्रू क्रिएटिंग अवेयरनेस. और इस मंच पे आना, दिस इज़ द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. एंड ये बस यही क्रिएटर्स को यही मोटिवेट करता है. ऐसे अवार्ड फंक्शंस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं. तो ये एक ज़रिया होता है कि हम सबसे मिलते हैं. इवेंट पे आके, बिकॉज मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स के साथ आजकल सस्टेनेबल क्रिएटर्स को भी मौका दिया जा रहा है, तो काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके. थैंक यू. Hey guys, my name is Harish, also known as कलाकार. We make content on automotive, motorcyclist, safety के बारे में हम लोग ज़्यादा बताते हैं. एज ऑफ नाउ इंडिया में जितना ज़्यादा एक कल्चर बढ़ रहा है मोटरसाइकिलिंग के लिए, उतना ही ज़्यादा सेफ्टी के लिए कंसर्न बढ़ता है. एंड दैट इज़ वेयर वी कम इन द पिक्चर. पिछले 1 साल से वी आर मेकिंग कंटेंट एंड वी हैव 235,000 ऑफ फॉलोअर्स, और बहुत ही अच्छी एक इंगेजिंग ऑडियंस है इन द स्पेसिफिक स्ट्रीम. हमारे जितने भी वीडियोज़ होते हैं, जितने भी लोग हमें देखते हैं, वो सारे के सारे इस स्पेसिफिक ऑटोमोटिव फील्ड को बहुत ही दिल से फॉलो करते हैं. एज ऑफ नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अवार्ड. बहुत सारे हम लोगों ने एक्सपीरियंस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की है, जिसके अंदर ना कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती है. वहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया आता है, और नवभारत ने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, एंड वी आर वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस. Hi, I'm Dr. Mukesh Gupta, obstetrician and gynecologist from Lenest, Malad, Mumbai. I have been a practicing gynecologist for over 2.5 decades, and my passion is to do patient education. Although I'm a practicing gynecologist, but I have been involved in a lot of these patient awareness activities. For the last 25 years, I have been working on areas of education for young adults, where I was awarded a national prize on adolescent health, and from that time onwards, 1999, I've been working on this field. Today, I'm extremely glad and happy and extremely excited to be in this August group, which is a little different from my field. I have been an obstetrician, I have been a doctor, but here I am coming across people who are influencing so many people in a very different way. Well, my job here is to make them realize what is the importance of awareness and advocacy for health. And if, as an influencer in healthcare field, I can provide this small added information which will help them stay healthy, stay happy and stay safe, I think I've done my job. Thank you very much. In this era of digital media, in this era of awareness and information, in this era of advocacy,
an organization like Navbharat has organized this platform where they have got people who are creating a huge amount of influence on the masses to come together, and if the common message of welfare and well-being can be passed on to the large masses, it will really help. I think this is an amazing platform created by Navbharat, and it is going to help create a huge networking amongst the influencers to give the right message and do the right thing in the right direction for the general population. I have been to a lot of conferences in my journey of 25 years of medical practice and education. Well, I have seen so many events and activities across, whether it is a program which is related to health, or it is related to beauty, or whether it is so many more things. But I think Bubble Communication has done a great job by this beautiful awareness and the way they have organized this event. It looks as if all of us are being treated with utmost respect and care. And I think all the credit goes to the team Bubble Communication for pulling this up. Thank you so much. Thank you for having me. What do you think about Navbharat creating this platform for influencers like you and others? How important is it? It's really important as a platform in general. Influencing is not just something that you influence somebody. It's given a platform that is actually feeding people and a lot of businesses. There's so many businesses that are doing so well through this platform. It's not just us who are benefiting through it, but we get this platform to display so many brands that are out there which had no way to communicate in a bigger way, and this is how you can reach masses in so many ways. I think it's a great platform for us, for the brands, and everybody in general. So it's like a great give and take system for everyone over here. Thank you. It's just rewarding for the hard work I put in for the brands. For my platform is not just for me. I believe in supporting local brands a lot, homegrown brands and businesses. So whenever a brand comes to me and says that your posts give me so many orders, and this is something that I really appreciate. So that's my true reward. So yeah, that's more rewarding and awarding. That makes really So now Bubble Communication is celebrating 15 years as a PR team. Oh, great. Congratulations on 15 years, and I hope you complete more and more years and keep growing, and thank you for having me. Thank you. I am Finance with Sharan. My real name. Okay? Yeah. Hi, I'm Sharan Hegde, also known as Finance with Sharan. I'm a finance content creator, and I create content on how to invest and how to save taxes and how to make your money grow across social media platforms. I feel very grateful. Never thought that I would be winning an award for becoming a content creator, because I never wanted to make it like a career, to be honest. But because the people loved it, and it was a big gap in the market for people learning how to invest their money in an easy manner, I think that it was the right place at the right time. So very, very grateful for winning the award. So Bubble Communication is a PR team. Sorry? Bubble Communication is celebrating 15 years. Any words for this? We are the PR team. Okay, I think this is a fantastic job. Really, really excited to come for this event. Thank you. Hello. Hi. Thank you. Yeah. I'm obliged. I am very glad that they took this initiative and gave that respect and gave us the award that I can say I was waiting for. And yeah, we are here to celebrate. So it's been 18 years in fitness industry, and I have been awarded as a fitness influencer and motivator over here in Bharat Times. It's been almost 11 years as acting as a celebrity fitness coach, and I've transformed multiple celebrities from Kangana Ranaut to Sonu Sood, Kapil Sharma, Farah Khan, Neetu Singh Kapoor, and lot many more. Yeah. Thank you.
Congratulations to Bubble Communication. Sorry. Congratulations to Bubble Communication, and keep going, keep doing good work. Thank you very much, guys. Okay. Should I? Okay. Hi, my name is Prabeen Kaur Bhamra, also known as PKB, and I create content around makeup, fashion, lifestyle. I talk a lot about being filter free and a lot about self-love. And I have my own hashtag NoFilter with PKB, where I encourage and inspire everyone to share their no-filter journeys, where they feel like they belong to a community where everyone's just very inclusive and everyone loves themselves the way they are. Yes. I'm actually really excited because Navbharat was the first ever newspaper that I could know of, because that's the only newspaper that I would get at my house for like 22 years. So it's a really exciting, like a full service. The PR Bubble? Okay. Bubble Communications, congratulations, Bubble Communications. I'm so excited for your journey, and I hope to see a lot more coming from your side. Thank you so much. From that side. बेटा हुआ तो मैंने एक पूरी डुलकी मारी एंड आई वेंट बैक टू समथिंग दैट आई लव्ड. मैं 8 साल की एज से कुकिंग करती थी एंड उसे मैंने प्रोफेशन बना लिया बिकॉज मेरा मोटो था रही है. एंड साथ में मैं बहुत सारे इंटरनेशनल रेसिपीज़ भी करती हूँ. अभी रिसेंटली मैंने एक टीनेज स्पेशल स्टार्ट किया. इट्स बेसिकली सिंपल रेसिपीज़ फॉर दोस्त जिन्होंने कभी लाइफ में कुकिंग नहीं की है, एंड दैट्स यूजुअली How are you? Thank you. My pleasure. Hindi, English. Okay, आपको जो ठीक लगे. ठीक है. Hi, my name is Amish Tripathi. I'm an author and also a broadcaster. I host documentaries. Also a former diplomat and a former banker. Clearly, I couldn't make up my mind, so I ended up doing many things. I was an Indian government diplomat based in the UK. And I'm primarily an author and a host for documentaries. So I didn't know how much India has changed in the last 5 years, man. And going and encouraging this new field in India, the field of influencers. I'm primarily an author and a broadcaster. I've just entered this space. Let's see how it goes. And thank you, Bubble Communications. Okay. Ciao. हाय जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम रोहित झिंझुर के और आई एम कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम मेकिंग ब्लॉग ऑल्सो. आई एम डूइंग ऑन इंस्टाग्राम, आई एम मेकिंग सम एक्शन वीडियोस लाइक जो मेरे रिएक्शन बॉय फैमिली को अच्छा लगता है, और ब्लॉग बनाता हूँ जो सबको जानना होता है कि मैं अपने रियल लाइफ में क्या. लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि नव भारत ने मुझे इसके लिए चुना. सो थैंक्स टू माई रिएक्शन बॉय फैमिली एंड माई मॉम एंड माई सिस्टर. Thank you. Thank you. So the whole world knows you at this point, but for those in case anyone who does not know, if that's possible. Okay. Please introduce yourself. Hi, my name is Swapnil Kusale. I am a rifle.
Yeah, Salil. So my name is Salil, and well, one of my that's us as well over there. But I think it's fun to actually come to an award function always when hosting or doing something, just sitting in the crowd there, and then what we hear is, well, there's a reason I've been called, so it's actually fun. I've been doing radio for a long time, so जब उसकी 4 साल से सब इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा बन जाते हैं, कुछ लोग बन नहीं पाते हैं, कोशिश सबकी जारी है. सो आई थिंक एन अवार्ड शो इज़ ग्रेट टू अवार्ड दोज दैट आर डूइंग अ राइट एंड अ गुड जॉब. हर कोई इन्फ्लुएंस करना चाहता है, हर कोई इन्फ्लुएंस कर नहीं पाता है, तो जो कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है. Cheers. Yeah. Bring in, getting us in and just being out there, putting a message out is very important. लोग बहुत बड़े इवेंट्स करते हैं, and if it doesn't get effectively promoted, there's no point. So I'm glad that actually the word is going out there. So. Thank you. इस लोगों के लिए जो लोग रोड पे रहते हैं तो उनके रेस्क्यू करके ऐसे हमारे शेल्टर होम है जहाँ पे उनको रखा जाता है. बच्चे, ओल्ड एज पीपल जिनको घर से निकाल दिया है, जो कहीं ना कहीं फुटपाथ पे ऐसी ज़िंदगी जो का एक अपना योगदान होता है, और हर एक का कहते हैं काम अप्रिशिएटेबल होता है, किसी का छोटा हो बड़ा हो, लेकिन सबके बंडल से एक हमारे सामने रिजल्ट आता है. थैंक यू. या From here, good to go. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विवेक है, विवेक केशरी. मैं एक फैशन कंटेंट क्रिएशन हूँ. ऑल्सो आई क्रिएट कंटेंट ऑन डिवोशन. सो फैशन किसी ने सराहा है और मैं कितनी तारीफ़ कर रहा हूँ. आने से पहले मैं बहुत खुश था कि 9-12 टाइम्स के लिए जाना तो ज़रूर जाऊँगा. तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है मैं आपकी तारीफ़ कर सकूँ. आप लोग बहुत सालों से काम कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो. थैंक यू. Congratulations, first of all, 15 years. It's not a small, easy feat, and I hope you guys go for the next 100 years and make a change in the nation. Thank you so much. I always meet people who have been part of my journey. You know, I meet people who have now are starting their own creative journeys. You know, who got inspired by the show, my work. तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है. It's a big reward, and every time your work is appreciated, you get love. So you know, it makes you feel happy. So I'm very happy to. So the platform doesn't matter. I used to do that on TV. I used to do it on. Now I do it on digital. I did another show for another competitive channel. So pata nahi, in the future, Mac 2.0 might come back, a new and improved. But I still continue to do the same kind of work. So please, I mean, you can check out the other platforms where I'm putting out my work. I am Yuvraj Dua. I create content.